Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮਹੀਨ ਨੁਸਰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਲੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਤੋਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸਾਨੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 18 ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਦੇ ਐਕਸ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ whenever such kind of incidents happen there is a lot of hue and cry, but is the mentality of the community changing? So let's focus on this aspect and continue with the discussion with Maheen Nusrat. Maheen, good evening, welcome to the program. Hi uncle, how are you? I'm doing great, Thank you thank for you very having me. much. Thank you. So Maheen, आप पाकिस्तान में भी देखते हैं, आप फ्रांस में भी देख रहे हैं, कनाडा में भी देख रहे हैं. This is nothing new, but it was expected that with the changing of the times कुछ mentality में change आएगा. ये सानिया खान का जो केस हुआ है उसके बाद दोबारा ये चर्चा शुरू हो गई है कि ये हमारी कम्युनिटी में ठीक नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद ये चल रहा है. So what do you feel? What is happening in our communities, whether it is the Pakistani community or the Indian community, or as a matter of fact in other communities also we see this kind of thing happen. But खास तौर के ऊपर आज हमारा फोकस रहेगा साउथ एशियन कम्युनिटी के ऊपर. तो ऐसे जब इंसिडेंट्स होते हैं तो कम्युनिटी में सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारी मार्चेस होती हैं, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, but then it again fizzles down and again things are back to normal. So from what perspective do you see all this? So I think it's not one perspective, it's a multiple sort of perspective. एक तो हमारा कल्चर है, हम लोग शादी को मतलब अभी भी ऐसे हैं लोग जो अगर बेटी आती है घर में बताती है भाई मेरे साथ जुल्म हो रहा है या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, and these are real life scenarios. So just to give you a little bit of context, so I am a part of this organization that's in the UK, which is to support women of domestic violence. And I have been involved over the years as well in different capacity with different organizations. तो ये कहानियां देखने में आती हैं, बहुत ज्यादा सुनने में भी आती हैं कि खवातीन के साथ ये हुआ और ये पता चलता है lot of them are alone. Their families are saying वापस चली जाओ. मतलब I have friends who have experienced this. So nearly मतलब कहना चाहिए मौत के मुंह से निकल के आ जाती हैं लड़कियां, जिंदा होती हैं, फिर भी पेरेंट्स कहते हैं नहीं वापस चली जाओ, कोई बात नहीं, तुम ही अपने आप को बदलो. So a lot of that happens. In the case of abuse, there's also the element where sometimes the girls will even have support from their family, but they don't leave. And there are multiple factors playing in that. So abuse has a effect on your mental health and your decision-making abilities पे फर्क पड़ता है क्योंकि you've been gaslit so long. Then अगर आपको बाहर जाके ये पता यार stigma will be you, community ने ostracize आपको करना है और बंदे को कोई नहीं पूछेगा, then a woman thinks 10,000 times before she's going to take that step. Similarly, other things are financial security is very important. So a lot of the times, especially if women have given up their careers after they've had kids, are financially completely dependent on this person, it's very difficult to leave the situation. So I mean personally I feel like it's great to have these conversations, and we do it. I do see some shift happening. I think ab my generation, for example, we're having these conversations, and a lot of us girls will be like, nope, I'm not going to put up with this. If something like this happens, I have to find ways to get out. And we also have resources available now. So there's a lot of, like, for example, yahan Canada ke andar Nisa homes hai, and there's various other organizations as well. So there's a lot of resources that have popped up, and the reason for the resources that have popped up is because community के अपने अंदर से हमें support नहीं मिलती. So we need to change the way we think, the way we talk about this. कि divorce is not a bad thing. It's not the end of the world, and it doesn't have to be okay only in the time of कि abuse हो रही थी. From our Islamic tradition, Prophet ﷺ has granted divorce to a woman on the basis of the fact she said मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद. Something as basic and simple as that. भाई आपने उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, आपको उस शख्स की शक्ल नहीं पसंद. And the Prophet said, okay, that was enough. But a lot of the times हमारे यहाँ एक हदीस को और एक चीज को ये यूज किया जाता है कि जी divorce is the most disliked. And I'm specifically always talking about the Muslim community. That divorce is halal, allowed है आपको,
but it is the least disliked or the most disliked of halal things, right? So अल्लाह ने इजाजत दी है, but लेकिन अल्लाह को नहीं पसंद है। क्यों? उसकी एक लॉजिक है, वो ये कि भाई फैमिली यूनिट जो होती है वो इस्लाम के अंदर उसकी बहुत वैल्यू है, because a kid from a psychological developmental point of view requires both parents in their presence. But then in an abusive household, in a toxic environment, that is equally bad for the child. And a lot of kids, and a lot of research has gone into this. So instead of living in that toxic environment, separating is better, and kids actually grow up with a different outlook. So I think what ends up happening, I feel, in the conversations, there's a few things that happen. One, एक तो हम religion को लाके ये बात कर देते हैं कि नहीं, ये तो dislike चीज है, allowed है, let's try to make it work, क्या किया जा सकता है? तो so the shame is always that of the woman. It's always, तू क्या करेगी? You have kids. अगर बच्चे हैं, बच्चे नहीं भी हैं, 30 साल की होगी है, तुझसे कौन शादी करेगा? Like literally, again, मतलब हमारी पहचान को एक उस शादी से बांध दिया जाता है, चाहे आप अंदर ना खुश हो, जुल्म सह रहे हो, and all these things. So the conversations definitely need to change, right? And I think the families need to step up, and I mean, a divorced daughter is better than a dead daughter. That's very true, but this thinking is not changing, जैसे आपने बात की। और इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर एक औरत स्टेप लेके डाइवोर्स देती है तो उसको गलत माना जाता है, पर एक मर्द अगर ये कर ले तो दैट्स फाइन, उसको इजाज़त मिल जाती है और कम्युनिटी भी और सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करती है। तो जब आप डाइवोर्स शेमिंग की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बात की, 2 एग्जांपल्स आपने बड़े अच्छे दिए कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और एक माँ बाप आप भी चाहते हैं कि भाई तुम अपने आप जाके संभालो, चलो ठीक हो जाएगा, गिव सम टाइम, कोई बात नहीं, ये तो हर घर में चलता है, ऐसी एक सोच हमारी जो है वो चलती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट द कम्युनिटी एट लार्ज, और जैसे आपने अपनी जनरेशन की भी बात की है कि थिंकिंग में चेंज आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज भी डाइवोर्स की जब बात आती है तो आंखें खड़ी हो जाती हैं सबकी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वो सारी चीज़ें चल रही हैं। सो क्या कम्युनिटी में कुछ ऐसी अवेयरनेस लाने की कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं एट द कम्युनिटी लेवल, नॉट कि भाई एक संस्था बन गई और वो सेमिनार्स करवा रही है या बातचीत कर रही है, तो ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं? Locally, लेकिन मुझे ये मालूम है कि काफी organizations that are there that do that. I think, and personally, I think this is in the Muslim community, and I'm sure it can happen in the Sikh community as well, and in the Hindu community as well. I think the religious institutions themselves have a very important role to play. So हमारे मंदिर, हमारी मसाजिद, हमारे गुरुद्वारे, they have a role to play. So I think because they have a role to play, but unfortunately they are not playing the role, because when we see the statistics, even from India also, or Indian community also, 45% rise in divorce rates. So again, this is an issue which needs further comprehension and in-depth analysis. Let's go for a break. We'll be back, and then I would like to talk to you one-on-one from your perspective, from your age-wise perspective, कि क्या बात है, जैसे पहले था शादियां लंबे समय तक चलती थी, पर आज क्या हो गया? क्या इंडिविजुअलिस्टिक सोच जो है एक औरत को कहती है कि भाई मैं अपने आप इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, फाइनेंशियली भी मैं कमा सकती हूँ, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरी किसी से नहीं बन रही, जिसके साथ मेरी शादी हुई तो मैं अलग हो जाती हूँ? तो वो भी एक पर्सपेक्टिव जो है, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं और आप क्या सुनते हैं कम्युनिटी में, इसके बारे में बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। हर रंग है साडे को, हर मॉडल, हर एक दी अपनी वक्री पहचान। असीं एक परिवार हाँ, साडा कर्म है अगे वधाउणा, सफर नूं सौखा बनाउणा। बसंत मोटर्स, तुहाडे नाल, तुहाडे करके। है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली। कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है। मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है। दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा। भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा। पायल बिजनेस सेंटर सरी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹੀਨ ਨੁਸਰਤ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਈਵੋਰਸ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। If you're looking for home, auto, travel, business, life or recreational insurance, they have 9 branches in the lower mainland to serve you and they're open 7 days a week from 9 a.m. till 9 p.m. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6045076666 604-507-6666। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6045972284 604-597-2284। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹੀਨ ਨੁਸਰਤ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ हैं। सो माही जी, जो मेरा सवाल था ब्रेक से पहले कि अब क्या चेंजेस आ गए सोसाइटी में कि एक लड़की जो है वो एडजस्ट, जिसको हम इन कोट्स एडजस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले हम आम तौर के ऊपर अपने पेरेंट्स से सुनते हैं कि जी एडजस्टमेंट होंदी सी जी, यू हैव टू लिव टुगेदर, एंड जो आपने बात की कि आज भी पेरेंट्स यही चाहते हैं, तो क्या आप समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके सर्कल्स के अंदर कि आज एक जो लड़की है वो समझती है कि नहीं, आई कैन स्टैंड ऑन माई ओन फीट एंड इफ़ माई रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग द वे आई वॉन्टेड, आई कैन लिव सेपरेटली ऑल्सो एंड डाइवोर्स इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर देम। सो व्हाट डू यू हियर अबाउट दिस? So uncle, first thing, जिन्हें भी कदे शादी करते हैं ना, कोई भी नहीं सोचता कि I'm divorced. Absolutely. Right? You don't get into a relationship with the intention to divorce. जी. So first thing is that. दूसरी चीज जो आप ये चेंज की बात कर रहे हैं, आई फील लाइक जब अगर आपने अपने बड़ों को देखा ना, अपने अपने जमाने से देखा, और आप देख रहे हैं यार टॉक्सिक हाउसहोल्ड में भी लोग ग्रो अप कर रहे हैं, देयर लाइक they've lived through that reality, so they're like yaar, I don't want to live through that reality, I don't want to put my kids through that reality, so you make a conscious decision कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है I will leave। ठीक है, इसका मतलब यही नहीं है जो आपने वो एक तो एडजस्टमेंट का लफ्ज यूज किया था और एक आपने जो एक दूसरी बात बोली थी कि if I can live on my own terms. I mean, should we not all be able to live on our own terms, even in a relationship? And it's possible to do that. मसले वहाँ आ जाते हैं जहाँ आप एक दूसरे को स्पेस नहीं देते हो, आप एक दूसरे को इंडिविजुअलिटीज होती हैं उनको नहीं समझते हैं, and it's about respect at the end of the day. So if you're a couple, you know, you have to respect each other's individuality, but as well as a couple unit, what works for you as a family. जी। And marriage is not easy. It's growing pains, उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, सारा कुछ होता है. So I wouldn't say कि like ये सुनने में आता है कि हाँ जी अब जो है बर्दाश्त की कमी होगी. I don't think that's necessarily true. Because आप जब बैठे आप लोगों से बात करें, आप जब सुने जिनकी कहानियां आप सुनते हैं, जिन्होंने फाइनली डिसीजन ले लिया and they moved out, there's a lot of stuff that they've gone through before they've taken that decision कि अब I cannot take this anymore and I'm out. जी। So my personal belief now is, I think हम लोग in the South Asian community we're so obsessed with marriage, right? हमारी मतलब पहचान, स्पेशली लड़की के लिए उसकी तो पहचान ही शादी है, वो पढ़ लिख ले, वो कुछ कर ले, नहीं तू शादी क्यों नहीं करती है, कदा करनी है, right? Like things like that. So वो जो एक चीज है जो हमने अपनी पहचान को उससे अटैच कर दिया। Right. My experience भी कह लें उसमें, मैं कहती हूँ, I mean I didn't get married at like 20, you know, I was 27 and a half and I got married, and I would say more mature than say a 22, 23-year-old. Right. But I had no real life experience. I lived in my parents' home, I went to university locally, all of that. I think whether it's a boy or a girl, I think we all need to have real life experience. Men, we allow them that opportunity. A lot of them, you know, हम सवाल भी, I mean, it goes back to the way we are raised as men and women. हम differently raise करते हैं लड़कों को, हम differently raise करते हैं लड़कियों को. तो, you know, I have never experienced that independence in that sense. कि मैं खुद रही हूँ, अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ, मैंने अपने बिल्स खुद पे किए हैं, मैं अपने पेरेंट्स के घर से अपने हस्बैंड के साथ चली गई. Right? So I think for your personal development, it's very, very important. On top of it, another thing that I would say is, I think we need to normalize counseling, like absolutely normalize that therapy within our community. We should have premarital counseling. अगर दो लोग
एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो शादी करना चाह रहे हैं, इवन अगर अरेंज सिचुएशन और मतलब चीजें सही से मूव हो रही हैं, have professionals who are trained in this, have sessions with them. So they do this in the Catholic Church, by the way. So I have a friend who is Catholic, and when she was about to marry, they went through like an intensive counseling thing, which was like इतना मोटा binder, उसके अंदर सवाल जवाब values and stuff. That's not a guarantee कि आपकी वो चलेगी शादी, but at least आप थोड़ा जैसे कहना चाहिए, you're going into it eyes wide open rather than पता नहीं आगे क्या होने वाला है. At least you've had the conversation. आगे जाके मतलब लोग झूठ भी बोलते हैं, झूठ भी बोल सकता है आपका पार्टनर होने वाला भी. So I think those sort of things need to happen. These conversations, as I said, need to happen in the religious institutions. So our religious institutions are in like masjids, gurdwaras, they need to be talking about it and saying, actually, it is not okay for anybody to put up with abuse. It's not okay to be mistreated. And there is something called like trauma counseling, jise kehna chahiye. We all carry different kinds of traumas and things. We behave in certain situations because of something that happened in the past, and abhi wo situation hoti hai aur hame kuch remind karti hai, to hum trigger ho jate hain and we react. So sometimes it could be you're having just an ordinary fight with your husband, but he says something and you react from 0 to 100 because it reminded you of something else, and it doesn't make sense in that moment. So agar hum apne upar, I think शादी से पहले it's very important कि हम अपने ऊपर, अपनी healing के ऊपर as individuals, मर्द और औरत, that we take that time, we get to know ourselves. Who are we? हम में से कितने लोग ये कह सकते हैं हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम कौन है? I can't say that. Right? मेरे ऊपर माशरे की और ज़माने की इतनी expectations थी, different चीजें थी. I don't know who is real Maheen, and I don't know who is the Maheen that has been created as a result of the environment I've grown up in. Right. So learning my core and my authentic self. So वो एक चीज, and I wish, and this is something, I mean, I talk about it, I've always been a big fan of counseling and therapy anyways, but I would say this is something, and it's a lifelong journey. As a partner भी कर सकते हैं. And probably, you know, the reasons what you're talking about, Maheen, and that is why just recently Statistics Canada came out with their stats regarding common law partnership, and the younger generation is going in for common law partnership and at a big number. So that is probably one of the reasons जो आपने बात की है, और उसी की वजह से ये सोच जो है पनप रही है. पर अब दूसरी तरफ जब हम आते हैं तो क्या बातें चल रही हैं कम्युनिटी में, क्या किस कारण करके, क्या इज़ इट मैक्विज्म और इनफिडिलिटी, या क्या कारण है कि जो मर्द जो है आज भी औरत को विद ड्यू रिगार्ड्स जो पैर की जूती समझता है, जो एक मेंटालिटी जो हमारे मुल्कों से हमने आई, मुल्क तो बदल लिए हमने, इंडिया पाकिस्तान से हम कनाडा यूके फ्रांस तो चले गए, लेकिन वो मेंटालिटी में तब्दीली नहीं आ रही. और एक और बात आपने जो इम्पोर्टेंट कही कि माँ बाप भी बच्चों को और बच्चियों को यही तालीम देते हैं कि नहीं तुम जाओ, वापस जाओ. एंड एज यू सेड कि इट इज़ बेटर कि भाई अलग हो जाओ, बजाय कि उसकी डेड बॉडी बाद में आपको देखनी पड़े. सो इन इश्यूज़ के ऊपर क्या सोच चल रही है कम्युनिटी के अंदर? लेट्स गो फॉर अनदर ब्रेक, विल बी शॉर्टली बैक, एंड इन द लास्ट सेगमेंट वील लर्न मोर फ्रॉम यू एज टू व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट डू यू हियर फ्रॉम द यंगर जनरेशन की ये टकरार का कारण क्या बन रहा है? फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इनफिडिलिटी है, या कोई और कोई कारण है? सो वील टॉक ऑल अबाउट दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਪੇਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ. ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 13042 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ,
ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮਹੀਨ ਨੁਸਰਤ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਈਵੋਰਸ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਲਦੇ हैं जी महीन को, तो गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं। सो महीन, अब क्या आप सुनते हैं कि किन कारणों करके ये टकरार जो है बढ़ती है और इट गोज़ टू दैट लेवल कि कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हमें सुनने को मिल जाते हैं? So a lot of the cases are abuse cases, and abuse never just happens कि एक ही दिन ना सारे हमले एक साथ कर दिए. It's a build up of there's an entire psychology to it. There's a cycle to abuse. उसको समझना बहुत important है आपको. You know, you have the honeymoon phase and you have the blowout and then you again have the honeymoon phase. So वो बंदी जो होती है वो बड़ी confusion state में आ जाती है, उसको समझ नहीं आता क्योंकि अच्छे दिन भी होते हैं ना और बुरे दिन भी होते हैं, हर दिन बुरा नहीं होता जी। So there's a lot of abuse that is happening within the community. Even now there's a lot of abuse because I read about these, I see so many stories that are coming up. Secondly, I feel, and I can say this about within my Muslim community, having lived here, US, Canada, London, and now in Paris as well, what I've noticed is that the Muslim women, they're doing exceptionally well in all areas of life. So पढ़ाई भी कर रही हैं, jobs भी अच्छी करने लगी हैं, they're doing really, really well. Whereas I feel like in many ways the men, they haven't stepped up to the plate. In fact, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो कमा भी इतना अच्छे नहीं रहे हैं और एक वो चल रहा है. So I feel like there's been a huge disservice to the men in the last generation for some reason because of the way we've been appraising them. कि उनके standards high होने के बजाय low हो गए. So a lot of the women are also on top of everything else are taking care of घर का भी and साथ में financial responsibilities are solely falling onto them as well. Now, अगर एक बंदी is completely responsible for everything, then what is the need for a partner? वो आपको घर में नहीं हाथ बटा रहा, वो आपको बाहर नहीं हाथ बटा रहा, आप ही के ऊपर सारा कुछ है. One person how much can you take? And on top of it, if you have to put up with abuse, मतलब एक बंदे की कितनी बर्दाश्त होगी? So those are the cases as well. So a lot of women then finally are like, okay, I'm leaving. So I have friends and cases that I know from the organizations that I'm a part of, that's sort of the situation that's also happening. So there's that. And I think, honestly, Uncle, I think going back to the thing that I was talking about, trauma, if we talk about us, who are the immigration first generation, second generation children, हमारे DNA के अंदर partition का भी trauma चलता आ रहा है, फिर हमने immigrate किया, racism, like there's so many things जो हमारे साथ चलते आ रहे हैं. So those traumas, they come out in our interpersonal relationships in a different way sometimes as well. So अब दो लोग are carrying these different traumas from their own lives and they're not aware of them at all when they come into this and they're together and छोटी सी चीज होगी वो बड़ी explode हो जाती, समझ नहीं आ रहा हुआ क्या, because we're not aware. So I would go back to that. I think we need to spend those times with ourselves. I mean, I'm coming into this very late in my life, myself, and realizing the importance of that work because I have the past 1.5 years, that's what I've been getting. I'm like, oh my God, because I started noticing things that were repeating in my life that I didn't want to repeat. Right. And why is it happening? So then taking that time to get to know myself, taking that time to spend that. So I wish these were the conversations, and that would have to happen on the family system. आपके अंदर घर में ये conversations आपको openly करनी होंगी. लेकिन काउंसलिंग की जहाँ बात आती है, घर की तो बात छोड़ो, काउंसलिंग की भी जब बात आती है तो still it is considered to be a taboo. And that way also we are not progressing. और जहाँ पे आपने धार्मिक इंस्टीट्यूशंस की बात की कि हमारी मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिरों में ये चीज़ें आनी चाहिए, वहाँ पे भी इसको बहुत तरजीह नहीं दी जा रही और उसी के वजह से हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें हो जाती हैं. तो काउंसलिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि काउंसलिंग को क्यों अभी भी एक टैबू समझा जा रहा है हमारी कम्युनिटीज़ में? हम क्यों नहीं बाहर आ रहे, ख़ास तौर के ऊपर इन मुल्कों के अंदर जहाँ हम आए हैं? There are a lot of organizations which are willing to help, but still we are feeling that नहीं, ये तो हमारे घर को तोड़ देगी, ये जोड़ने के लिए नहीं है, जो तोड़ने के लिए अभी भी लोगों के मन में ये बात बैठी है. So उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है? So it's funny आपने जो ये एग्जांपल दिया, I mean literally I've heard this where somebody would say
नहीं मैंने काउंसलिंग नहीं जाना बिकॉज काउंसलिंग का मतलब ये है कि शादी तो खत्म ही हो जाएगी. सो वी वुड रादर बी ऑस्ट्रिचेस, हाइड आवर हेड अंडर द सैंड एंड एक्ट लाइक कि कुछ नहीं हो रहा. बनस्बत इसके अंकल फीलिंग्स आर हार्ड, फीलिंग्स आर डिफिकल्ट टू डील विद. ठीक है. और अब अगर आप और हमारा साउथ एशियन कल्चर ना, हम लोग फीलिंग्स को जरा मतलब भागते हैं, जब रिप्रेस करते हैं. So difficult feelings are very, very difficult to navigate. And honestly, when you go through, and I'm telling you this from personal experience, when you go through counseling or you go through therapy and you're going through that process, whatever comes up and whatever you're dealing with, it will knock you out sometimes for a week, 2 weeks even. Emotionally, आप इतना drain हो जाते हो, फिर आपने अपनी continue करना है सारा दिन अपना life. It is hard. So first of all, we need to make the commitment. We want to do it because on the other side of it, there's light at the end of the tunnel where we can sit and feel more relaxed and not as anxious. Secondly, it is possible that it might lead to divorce because you realize that this is actually not working out, that you actually made a lot of compromises. The other person's not meeting you, and you've actually erased yourself in the process. So yes, divorce can happen, but that is not the only thing. And the problem is a lot of the time, especially in couple situation, log counseling उस वक्त जाते हैं जब crisis आ जाता है. Right. Actually, therapy is something that can be ongoing constantly, just to improve our communication. Our communication skills for us South Asians are terrible, absolutely poor. Why? Because हमारे घर में अपने खानदानों में हम लोग, आप अपने घर में भी देख लो, कभी नहीं बात होती. I mean, I think we've been lucky in the sense that our culture has changed a lot. Like we can have open conversations with our parents, whereas I don't think our parents had that. No, of course. And still in a lot of households that's the case. So I think अगर हम वो जो है ना environment create करें. Now I have a 3-year-old, almost 3-year-old son. उसके साथ ना मैं गुस्सा जब करती हूँ तो वो मुझे आगे से गुस्सा दिखाता है. And your instant South Asian reaction is तुमने मुझसे ऊंची ज़बान में बात करी, that thing. And so I am now trying to be like, okay, you're angry. I acknowledge his anger. Okay. I'll give you a few minutes. Okay, tell me what's going on. Why are you feeling angry? Name the emotion. Go and work through that. Right. I don't know if I'm doing the right job. I'll find out. Well, absolutely, 30 this is the years right from step because you have to understand times are changing and you cannot follow the old footsteps what we have been seeing in our families. और जब तक वो changes नहीं आते तो बच्चों के अंदर जो उनकी emotions हैं, feelings हैं, उनको अब समझना पड़ेगा. अगर हम repress करते रहेंगे या उनको मौका नहीं देंगे तो unfortunately बाद में कोई ना कोई crisis जो है हमें देखना ही पड़ेगा. तो ये एक बड़ा important step है जो आप कह रहे हैं. बिल्कुल. But uncle, it didn't happen कि Gee, so we are back. There was some problem with the computer. Anyways, so you were talking about कि it didn't happen instantly. जी. I mean, after becoming a mother, I felt a whole lot of weird emotions. आप होते भी हो emotional, वैसे ही hormonal भी होते हो. So it didn't happen instantly. I went into therapy. I thought I had postpartum depression. I went into counseling. And then in the past year and a half or so, I've been actively doing a lot of work on this. If I hadn't taken that step to see my own patterns and to see where is this coming from, why am I screaming in this moment, क्या होता है जो मुझे मैं ऐसे react करती हूँ? Because there's a joke where we say I don't want to be like my parents, but I've become my parent. How did that happen? And that happens because हमने वो distance नहीं अपने और उस events के दरमियान create किया. And for a young child, what we think is minor might not be minor. So अगर मैं अपने बच्चे का toy लेके रख देती हूँ and he reacts and has a tantrum, you're thinking, yeah, it's just a toy. But his brain is not developed to understand it that way. So realizing that and recognizing that, right? But that only comes, again, from awareness and from doing the work. So taking that time, I mean, I think motherhood has been a blessing in that sense because it pushed me having to want to look at, okay, why do I But from behave this, this we way? can learn that, this kind of thinking has to start beforehand only. It's not towards the end when you are at that crisis level. उस समय आप action लेना शुरू करो, it will be too late. So हमारे घरों में ये चीजें जो हैं अब से शुरू होनी चाहिए. 100%. And open conversations. So uncle, one of the things that's happened that's very interesting over the last few years since Muhammad or Saima ki bhi shaadi hui hai, she's a counselor as well, and now Muhammad is mashallah a counselor as well. We end up, and we used to talk about these things, but now इतना हम लोग खुल के एक दूसरे से इन चीजों पे कई बातें कर रहे होते हैं. And I can see how the dynamics start to shift because we're willing to offer each other the space to come and sit and okay, let's talk. ये हुआ, मुझे ये चीज ने upset किया. But it was a journey, right? It has taken a while. आपको
आई थिंक अगर हम लोग अगर मेरी बात सुन के किसी फैमिली में किसी को ये फील होता है, तो अगर हम एक कॉन्शियस डिसीजन ले लें, लेट्स से इस पॉइंट हम लोग ये डिसीजन ले लें, यू नो व्हाट, मुझे इसकी बात में थोड़ा दम लग रहा है, लेट्स टेक अ मोमेंट, Yeah, and then you let's start reflect to look upon it. into it and you start Absolutely. reflect Absolutely. upon it, yeah. And then I mean mera hamesha, as I said, I was open to counseling and things, but as I started doing more and more of this work, I started coming into a lot more literature on this, started learning a lot more about these things. So you will start getting those things and attracting them into within your own field, because you'll be more open to it ना, तो आप उसको receive करने के लिए open होगे, तो आपको वो चीज resonate करना शुरू हो जाएगी. बिल्कुल So बिल्कुल. अगर किसी को ये चीज मतलब हिट करती है, अगर आज सिर्फ हम इतना कर लें, we're gonna make a conscious decision to start changing things slightly at home, whether it is taking 5 minutes at the end of the day to sit down and have a conversation as a family, and that could be the starting point, you know. Absolutely. And so that's what needs to happen. दैट्स वेरी ट्रू महीन, आपने जो बातें की हैं बिल्कुल आज समा ये मांग कर रहा है कि घर से ये चीज़ें शुरू हों, और माँ बाप जो हैं अब वो ओल्ड मेंटालिटी से बाहर निकल के अपनी बच्ची को एक्सेप्ट करें अगर कोई इशू सामने आ रहा है, और काउंसलिंग का सहारा लेके इन चीज़ों के ऊपर जो है अपनी सोच में तब्दीली लाना अब टैबू नहीं समझना हमें चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ सानिया खान जैसे जब केस होते हैं तब हम थोड़ी देर के लिए उठते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू वेरी मच फॉर योर Nice meeting you, टाइम. Uncle. दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन रेजोनेट्स विद आवर कम्युनिटी, और कुछ इसके ऊपर डिस्कशंस का जो सिलसिला शुरू हो. थैंक यू वेरी मच. Inshallah. Take care. Bye. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਹੀਨ ਨੁਸਰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ. ਆਪ ਇੱਕ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਜੋੜਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਛੱਡਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਦਰ ਸਪਰੈਡ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰਿਚ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੀਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਕਨਵਰਸ ਔਨ ਥੀਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼. दैट मैंटैलिटी नीड्स टू चेंज. थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. थोड़ा मेरा साथ होया करता है मंडे टू फ्राइडे शाम के 6 बजे पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम और यू वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कंटैक्ट मी थ्रू WhatsApp एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्रू at 6046037555, या फिर मैंने ईमेल कर सकते हो harpreetsingh@gmail.com. इत्थे ही करना प्रोग्राम की समाप्ति. फिर मुलाकात होएगी. हैव अ सेफ इवनिंग, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योरसेल्फ.